Now the fifth topic which we are going to see in module number 2 is, we saw 4 topics earlier. Ledger we finished. The next one is bank reconciliation statement, and the short form you can call as a BRS. Now, what is the meaning of bank reconciliations? First, understand what you mean by reconciliation. Reconciliation means to reconcile. To reconcile the two balances, that means there is a difference between two balances. You are comparing two balances. I'm not saying one balance is wrong and the other balance is correct, but the difference between the two, and you have to come either from one account to another account to get the balance tallied. That is called as a reconcile. To reconcile means to get tally. Understood? There is a difference between the two balances, and you have to reconcile those two accounts or those two balances and come from one balance to another balance. So what do you mean by bank reconciliation statement is, that means it is a statement to reconcile the difference between your cash book balance and your passbook balance. Now there is a difference between the cash balance which you are maintaining in your cash book and the passbook balance, which is the passbook, that is the book of the bank where your all the banking transactions are recorded. That is called as a passbook. So here if you see on a particular date, the balance as per cash book and balance as per passbook is always different. So I cannot say my cash book is wrong, or I cannot say my passbook is wrong. My passbook is also correct and my cash book is also correct, but still there is a difference, and I have to reconcile those difference. I have to come to tally those difference between the two books, between the cash book and the passbook, and for that BRS is prepared. Bank reconciliation statement is prepared. When I say it is a statement, it is not a ledger account, it is not a prime entry book, it is not a journal, nothing, but it is one kind of statement which is prepared periodically to reconcile the balance between the cash book and between the passbook. You have to take a base of either a cash book balance, take the transaction, all the effects, reconcile those balance and come to your passbook balance as on a particular date, or either you can take a balance, start with your passbook balance, reconcile those items which are causing the differences between the two balance and come to your cash book balance as on a particular date, for which date you are going to reconcile it. Now normally if your business transactions are very less, or in a smaller business transaction, sometimes monthly or a 6 monthly or a yearly BRS is being prepared. But nowadays bank transactions are also getting more and more. So in a larger business organization, or you can say in a medium size, normally after 2 days or after 3 days or at least once in a week, bank reconciliation statement is being prepared, so that at the end of the year we don't have so much of transaction to reconcile. Every week we are going to reconcile the balances, or at least once in a month. BRS is very important to do. So here we are going to see one practical problem also, that how to reconcile the balance between the cash book and the passbook. That we'll see it later. Thank you. Now after BRS, the last topic of module number 2 is, now we will start with BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें मैंने बताया था पासबुक से कैश बुक बैलेंस पे आओ, या यू कम फ्रॉम कैश बुक बैलेंस टू पासबुक बैलेंस. कभी कभार आपको कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा, वॉट एवर द एडजस्टमेंट इफेक्ट है वो देना रहेगा, एंड देन यू कम टू द बैलेंस एज पर पासबुक. सी हियर द इलस्ट्रेशन. सी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इज गिवन एज बैलेंस एज पर कैश बुक ₹1500. सो यू जस्ट स्टार्ट विद द कैश बुक बैलेंस, मतलब अपने को कैश बुक बैलेंस दिया है, उसमें ऐड और लेस करना है, एंड यू हैव टू कम टू द पासबुक बैलेंस. आपको लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, आउटर कॉलम में मैं लिख रही दूंगी 1500. सी 1 by 1 जरूरी नहीं है, 1 by 1 विल टेक ऑल द ट्रांजेक्शन. देखो फर्स्ट वाला, चेक ऑफ ₹3000 इश्यूड टू मिस्टर सी, रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक. देखो अभी क्या हो गया, मैंने चेक इश्यू किया है. नाउ व्हेन आई इश्यू अ चेक, डेफिनेटली चेक इश्यू हो रहा है, मतलब बैंक कॉलम में जाएगा, वो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा. बट मैंने कहाँ पे लिया हुआ है उसको, कहाँ पे लिख दिया मैंने, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक. कैश बुक का कैश में, मतलब मैंने बैलेंस रिडक्शन करके ले लिया हुआ है. समझ में आ रहा है? सो हियर माय बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड. सो हियर यू कैन मेंशन लेस दैट अमाउंट, दैट इज चेक इश्यूड टू सी recorded in cash column minus 3000, because my balance will be reduced to that extent, because मैंने चेक इश्यू किया है तो बैलेंस मेरा कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज अंडरकास्ट by ₹7,000. Now this is one. Debit side of passbook is undercast. Undercast मतलब टोटल कम लिया हुआ है. So actually में टोटल होगा क्या, ज्यादा होना चाहिए, बट मैंने 7,000 से कम लिया है, तो मुझे अगर मैं टोटल ज्यादा कर दूंगी
तो मेरा बैलेंस प्रॉपर हो जाएगा. दैट मीन्स आई हैव टू ऐड दिस आइटम. सो मैंने ऐड में लिया हुआ है अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ पासबुक ₹7,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹1,000. ओवरकास्ट मतलब डबल टोटल ले लिया या ज्यादा टोटल 1000 से ज्यादा दिखा रहा है. दैट मीन्स मैंने ऑलरेडी बैलेंस ज्यादा करके रखा जबकि वो है नहीं, मुझे कम करना है. तो आई विल डिडक्ट दिस आइटम. तो मैंने लेस में लिया हुआ है ओवरकास्टिंग ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक -1000. अगर मैं उसको लेस कर दूंगी तो मेरा बैलेंस बरोबर हो जाएगा. कास्टिंग मतलब टोटल बरोबर आ जाएगा. फाइन. नेक्स्ट इज चेक ऑफ ₹4,000 इश्यूड टू दिनकर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक. अभी क्या हो गया, मैंने चेक इश्यू किया. तो चेक इश्यू किया तो एक ही बार एंट्री आना चाहिए. एक बार एंट्री किया लेकिन मैंने दूसरी बार भी एंट्री कर दिया, मतलब गलती से मैंने वो बैलेंस कम कर दिया इश्यू करके. तो मुझे क्या करना है, अगर मैं ऐड कर दूंगी उसको तो मेरा बैलेंस प्रॉपर हो जाएगा. तो उसके लिए वो ऐड में चला जाएगा. चेक इश्यू टू दिनकर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक ₹4,000. वो ऐड में चला जाएगा. नेक्स्ट, चेक ऑफ 6,000 इश्यूड टू फरीदा रिकॉर्डेड ऑन रिसीट साइड ऑफ कैश बुक. क्या हो गया, अभी इसमें गलती क्या हो गया मेरा, मैंने चेक इश्यू किया हुआ है तो एंट्री कहाँ जाना चाहिए था, पेमेंट साइड पे, मतलब बैलेंस कम होना चाहिए था. मैंने वो तो किया नहीं, बट पेमेंट की जगह पे मैंने रिसीट साइड में उसको रिकॉर्ड कर दिया. तो डबल इफेक्ट से, डबल अमाउंट से या ट्वाइस अमाउंट से मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा. तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, लेस कैसे, एक तो जो ओरिजिनल एंट्री का इश्यू का मैंने पास नहीं किया वो मेरे को रेक्टिफाई करना होगा, प्लस उसके अलावा जो रिसीट साइड का है उसको भी पेमेंट में लेना पड़ेगा. बिकॉज गलती से मैंने वो रिसीट दिखाया जबकि वो रिसीट है नहीं, तो मुझे पेमेंट में दिखाना पड़ेगा. तो हियर आई लेस दैट अमाउंट बट बाय द डबल अमाउंट. तो एक तो जो 6,000 मुझे इश्यू करना था वो, प्लस 6,000 जो मैंने गलती से रिसीट में ले लिया. तो 6,000 प्लस 6,000 मिलकर 12,000 मैंने डिडक्ट किया हुआ है. सो हियर आई मेंशन चेक इश्यू टू फरीदा रिकॉर्डेड ट्वाइस ऑन द रिसीट साइड 12,000. लास्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम गिरीश 7,000 रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक. उल्टा हो गया, चेक मिला है मुझे, रिसीव्ड हुआ है, तो मेरा बैलेंस बढ़ना चाहिए, मतलब डेबिट में लेना चाहिए था, ऐड करना चाहिए था. तो मैंने वो ना करते मैंने पेमेंट साइड में ले दिया. तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, गलती से हो गया. तो मुझे भी क्या करने का, 14,000 से मुझे अकाउंट ऐड करना पड़ेगा. एक तो पहला जो चेक रिसीव्ड हुआ है उसका 7,000 प्लस गलती से जो पेमेंट में 7,000 दिखा दिया उसको भी रिसीट में लेना पड़ेगा. सो 7,000 प्लस 7,000 14,000 करके मुझे अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, बैलेंस ऐड करना पड़ेगा. सो ये लाइन मेंशन चेक फ्रॉम गिरीश रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड 14,000. अभी सब मेरा ट्रांजेक्शन हो गया. ऐड वाला कॉलम मैं ऐड करूंगी तो मेरा ऐड टोटल आ रहा है 25,000 जो मेरा ऊपर वाले बैलेंस से ऐड होगा, लेस मेरा हो रहा है 16,000. सो जो नेट इफेक्ट मेरा आएगा दैट विल बी बैलेंस एज पर पासबुक ₹10,500. सो अभी यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि कैश बुक का बैलेंस 1,500 और पासबुक का 10,500. तो ये रिकंसाइल करके कैश बुक का 1,500 बैलेंस हैज कम टू नाउ पासबुक बैलेंस ऑफ ₹10,500. दिस वे यू हैव टू reconcile. Understood? Yeah. Thank you. Yeah. Now we will see the examples of आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू. इन एग्जाम यू विल गेट अ क्वेश्चंस लाइक दिस परचेज. सो यू हैव टू से whether it is a capital expenditure, the reason for that, whether it is a revenue expenditure, the reason for that. On the other hand, it might be a income also. So whether it is a revenue receipt or a capital receipt and the reason for that. So let's see 2-3 examples. See, expenditure incurred on overhauling of machinery. Now keep it in mind, overhauling of machinery is nothing but to keep the machinery in working condition. जैसे हम लोग उसको बोलते हैं ना, थोड़ा रिपेयर किया, उसको ऑयलिंग किया, so that वो वर्किंग कंडीशन में रहे. मशीनरी परचेज किया रहता था तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था. बट मैंने क्या किया हुआ है, मशीनरी को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए मैंने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया. सो दिस इज क्लियरली माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज दिस हैज बीन इनकर्ड टू कीप द मशीनरी इन रनिंग कंडीशन सो दैट आई कैन continue with my production. So this is purely a revenue expenditure. Second, cost of goodwill purchased. Now goodwill is what? Goodwill is my